Yo, everyone. Yes, sure. Okay, chalo. We'll start with the discussion of the polynomial sheet that I shared earlier during the day. So let's begin. Question number one. If x, y, z are real, then u is always. How do you solve for u? Multiply both the sides by 2. So we have 2x square plus 8y square plus 18z square minus 12yz minus 6gx and minus 4xy. And then pair the terms something like this. 2u equals to, we take our x square plus we take 4y square and a minus 4xy. We club the terms in this form plus, then we take the remaining x square plus 9z square and a minus 6zx and a plus we take the remaining 4y square with the remaining 9z 12. So this would end up becoming x minus 2y whole square plus x minus 3z whole square plus 2y minus 3z whole square. So since u is a sum of perfect squares, the value of this will always be non-negative. Okay, it will always be non-negative. It could be zero, right? It could be zero in the sense that if x is equal to 2y is equal to 3z. So x, y, z in that case will not be, maybe different, but as long as they are in the ratio, so the values will become zero. So the answer would be non-negative. Okay, then next question number 2. Negative real parts. If A, B, C are positive, then the roots of the equation. So if the roots ax square plus bx plus c equal to 0, the roots would be in the form of minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. Now in this equation, we can write it as minus b by 2a plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. Now minus b by 4 minus b square minus 4a by 2a. This could be imaginary, it could be real. Okay, because it will depend on the value of b square minus 4ac. But the real part in this would be minus b by 2a. Okay, if this would be the imaginary part, then this would be the real part. This will always be the real part. And the real part is always negative because b and a are both positive. So this equation will always have negative real part. Because even if the roots are real, the sum of the roots would be negative and product of the roots is positive. So this would imply that alpha beta must have same sign. But if they have same sign and the sum is negative, then that will imply that both are negative.
So if the roots are real, they would be negative. If the roots are imaginary, the real part would still be negative. So the answer would be C. Is everyone okay with this? Okay, next question number 3. So let's say we have a town A and a town B. They are 60 kilometers apart. A school is to be built to serve 150 students in a town A and 50 students in town B. If the total distance to be traveled by all 200 students is to be as small as possible, then the school should be built at. So let's say the school is built X kilometers from A. So B se ho jayega 60 minus X. So now the total distance traveled by all 200 students would be 150 students traveling the distance of X units and 50 students traveling a distance of 60 minus X units. So बस इसको minimize करना है. So just differentiate. That'll give us the derivative. Okay, so it should be like that. City कितना हो जाएगा 50 100x plus 3000, which is a straight line strictly increasing. So इसका minima आएगा when x is minimum, which is 0. So the town should be built at A. The school should be built in town A. Next, question number 4. Just squaring both the sides, we get x plus 1 plus x minus 1 minus 2 root over of x square minus 1 is 4x minus 1. तो ये 1 कट गया, ये हो गया 2x. 2x का 4x हो गया. So minus 2 root over of x square minus 1 is 2x minus 1. फिर से स्क्वायर कर दिया. So 4x square minus 4 is equal to 4x square minus 4x plus 1. 4x तो cancel हो गया. We'll end up getting 4x is equal to 5 और x is equal to 5 by 4. So we only get one value of x and उसके बाद एक चीज चेक करना होगा validity. 5 plus 4 1 positive है, 5 by 4 minus 1 positive है and 5 minus 1 positive है. ठीक है. So it will have only one solution. Okay, the equation will have only one solution. Okay. Then next we go to question number 5. So we have a quadratic in the form of x minus a, x minus b minus 1 is equal to 0. And given that by the simple sa wavy curve ka question hai minus infinity, infinity. Now let's say we take a value a over here and b over here. So when we plug in the value of x as minus infinity, so the expression would be positive. When we plug in a, the expression is negative. B pay, the expression is again negative with a minus 1, and plus infinity pay, the value is again positive. So we have a continuous function, quadratic hai, continuous function, changing sign in the interval. So must have at least one real root in the interval, but it's a quadratic, it can have only two roots. So it must have one root over here and one root over here. So that is to say
one root n minus infinity to a, other root n b to infinity. Okay, next question number 6. 6 is we have fx is equal to 1 plus b square times x square plus 2bx plus 1. If the minimum value of this is m of b, then the range of m of b. Okay, so for a quadratic, what is the minimum value? What is the minimum value of any quadratic? minus d by 4. Minus d by 4a. तो हो जाएगा minus of b square, which is 4b square minus 4ac by 4a. b square minus 4ac. Oh, okay. So which would be like so 4b square minus 4b square will get cancelled off. Then minus 4 minus cancels off. 4 cancels off. 1 by 1 plus b square. Now what will be the range of 1 by 1 plus b square? 0 open to 1 closed. This would be 0, 1 closed. Okay, so the answer would be D. I think the answers in the answer key are mismatching. So probably कुछ questions का आगे पीछे हो गया होगा. So yeah, don't have to worry about that. Answer key में कुछ questions के answers आगे पीछे हो गए. I feel. Yeah, probably might have had happened. कोई question बीच में change हो गया. Something like that. Okay, next question number 7. The coefficient of this. Okay. So if you notice x minus 1, x minus 2 going up till x minus 100 would be like 100 brackets. Okay. So if you multiply all the x, the highest power of x that would be created would be x to the power 100 because there are 100 brackets. सबसे x को multiply करके we'll get x power 100. But what we are looking for is x power 99. That means we have to leave out one bracket and take the one bracket of x and take the number instead. Yeah. So this way, let's say we take the first bracket. So first bracket का x छोड़ दिया and we take minus 1 and we take x from the remaining 99 brackets. So what would be the coefficient of x power 99? Minus Minus 1. 5050. Similarly, second iteration, second bracket का x छोड़ दिया, minus 2 ले लिया and we take x from the remaining entities. तो उस केस में minus 2 हो जाएगा. Going on in this way, minus 3 up till minus 100. So this would effectively end up becoming sum of first 100 natural numbers, which is 5050. 5050. So value to easily remembered. So the coefficient of x power 99 would be minus of 5050. Okay, next question number 8. We have to find the value of the range of x and the range of y. So बस इसमें तो सिंपल है. एक बार consider this as a quadratic of x. तो 2x square plus 6xy plus 5y square minus 1 equal to 0. Now, for real values of x, the d of this should be greater than 0. Greater than equal to 0. तो इसका d कितना हो जाएगा? 36y square minus 4 to the 8 times 5y square minus 1. This must be greater than or equal to 0. तो simplify कर लो. ये कितना हो गया? 636, 8 5 is 40. So minus 4y square plus 8 is greater than equal to 0. और
this would be 4y square is less than equal to 8, y square is less than equal to 2. So y square is less than equal to 2 will give us C as one of the answers. And then we repeat the same iteration for x to get the values of x is like we consider it as a quadratic of y. So 5y square plus 6xy plus 2x square minus 1 equal to 0. And फिर से इसका d ले लो, so that will be 36x square minus 5 to the 10 into 2x square minus 1. And this has to be greater than equal to 0. So 20, 16x square minus 10 plus 10 is greater than equal to 0. अरे यार यार अरे सॉरी 5 4 20 होगा ना ये 5 4 20 20 20 40 हो गया तो ये -4 हो जाएगा वापस से हाँ ठीक है सो इधर गया ये इधर गया माइनस माइनस से कैंसिल हो गया ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 वुड बी mod x has to lie between mod x has to be less than √5. A and C would be the answers. Correct. Okay, moving on. Question number 9. So we have x cubed plus 3x squared minus 9x plus c equal to 0 as a cubic, and it is given that the roots are in the form of x minus alpha square and x minus beta. Okay. So in that case, we can consider the roots to be alpha, alpha, beta, and then applying the sum of the roots. So 2 alpha plus beta is -3. That will be equation 1. And then sum of the roots taken 2 at a time. That will be alpha square plus 2 alpha beta is equal to -9. -9. ये हो जाएगा equation 2. So 2 equations, 2 unknowns. We solve for them. पापा 21 मार्च मैं बताऊं टाटा आईपीएल आ रहा है Now we solve them simultaneously. Is everyone able to hear me? Alpha equal to 1, beta equal to 5. That is what we get. -5. Sorry. Alpha equal to 1, beta is -5. And then C would be give us, C would become the product of the roots. C would represent the product of the roots. Okay, so that will give us -5 as the answer. Okay, next question number 10. So 10 is consider the following diagram and we have to comment on what will be the values of so and so things. So pehle to it's an upward opening parabola, so that will tell us A is greater than 0 for sure. Well, the vertex lies in the third quadrant, so minus b by 2a has to be negative, but 2a is positive, so this would imply b has to be positive as well. And for C, we look at the x-intercept. The x-intercept is negative, so C would be negative. Okay, A plus B minus C
A plus B minus C is positive. A plus B plus C f of 1. अच्छा, we don't know f of 1. F of 1 negative भी हो सकता है. So so A, B, C is negative. ये तो हो गया. A is positive, B is positive, C is negative. So A plus B plus C is negative. C is negative. B is positive. And सी भी तो होगा सर। C भी होगा. A plus B minus C. हाँ ठीक है, सही है. A is positive, B is positive, C नेगेटिव है, माइनस C पॉजिटिव हो गया. तो A plus B plus C भी पॉजिटिव है, राइट? Okay, next then we go to the सर 9 में एक और सोल्यूशन होगा, -27। 9 में माइनस दो दो रूट्स आ रहे हैं. दो हाँ अल्फा का दो वैल्यूज आ हाँ रही है. अल्फा, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -3 था क्वाड्रेटिक। अल्फा स्क्वायर को 1 डालेंगे तो ये हो गया 1 -5. अच्छा, और क्या आ रहा है? अल्फा -3,3 -3 and 3. अल्फा -3 बीटा 3। हाँ वही तो, -3 and 3. ओके. 6 3 -3 9. और ये कितना आ जाएगा? -18. 3 3 9 -18. हाँ सही है यार, दो पॉसिबल वैल्यूज है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस, बीटा को जब बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा का क्वाड्रेटिक बनेगा. सही है. राजीव चेक करना यार, यू मिस्ड आउट ऑन दिस. राजवीर. ओके, तो ये हो गया 10. ये हो गया. ओके, नेक्स्ट 11. Consider the unknown polynomial which when divided by this is this, and the remainder when x is. So this is like remainder theorem का question है. So we'll take fx as x minus 3, x minus 4, sum qx and plus rx. The standard rule or formula that we have for the remainder theorem. So now we know that since the divisor is a quadratic, what must happen to the remainder? Linear. So Rx को we take as Ax plus B, and then remainder theorem apply कर दो, that if the remainder when divided by x minus 3 is 2, so that will imply f of 3, which would be 3a plus b, must be equal to 2, and f of 4, which would be 4a plus b, must be equal to 2, and 1 must be equal to 1. अब solve कर लो and get the values of a and b. So how much would be a? -1 कर लिया. A B will 5 come to be -1, and then that will imply b is 5.
So A is 1, -1 and B is 5. So question number 11, Rx equal to x square minus x plus 1 has two distinct roots, then the exhaustive values of A. अच्छा सॉरी, Rx equal to A का वैल्यू वो नहीं है, सॉरी मिसइंटरप्रेटेड द क्वेश्चन. So Rx is Ax plus B, हो गया x minus x plus 5. So 11 is minus x. If minus x plus 5 is equal to x square plus ax plus 1, then and it has two real roots. Two real roots. तो भाई d को greater than 0 करना है, तो this quadratic becomes x square plus a plus 1x minus 4 is equal to 0. तो d greater than 0 कर देंगे, तो a plus 1 whole square plus 16 has to be greater than equal to 0. So the answer would be all. सर आई गेस ये लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि rx ही x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है. नहीं नहीं, Rx तो ये है ना, Rx भी द रिमाइंडर. मैं भी पहले वही मिस इंटरप्रेट किया था जो तू किया ना, एग्जैक्टली मेरा भी पहले वही इंटरप्रिटेशन था. बट द क्वेश्चन इज लेट Rx बी द रिमाइंडर. तो Rx तो ये हो जाएगा, ठीक है, ax प्लस b वाला पार्ट. एंड नाउ वी वांट इफ Rx इज इक्वल टू दिस हैज रियल रूट्स. मैं भी पहले एकदम यही इंटरप्रेट किया था कि Rx को, क्योंकि ऑप्शन देख के भी वही मिसलीडिंग लग रहा है कि हाँ d ऑप्शन जीरो बी करेंगे लग तो रहा था 2 के बहुत. टर्म्स में रूट्स आ जाएगा. हाँ हाँ, मेरा भी पहला इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वही था. फिर मेरे को क्लिक किया, फिर आई रियलाइज कि यार Rx तो जब यार माइनस एक्स प्लस 5 Rx ऑलरेडी है, तो हाउ कैन इट बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. सही है, मतलब यू उसमें दैट्स दी, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, जस्ट इट वाज जस्ट अ मिसइंटरप्रिटेशन. सॉल्व वैसे करना है. तो दैट इज दी दी ट्रैप सेट इन द क्वेश्चन, कि ऑल्दो बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, बट थोड़ा सा ट्रिकी था ये. तो यहाँ पे a प्लस 1 प्लस 16 होल स्क्वायर आ गया, सो द आंसर वुड एक्चुअली एंड अप बिकमिंग ऑल रियल नंबर्स. तो ये 2 के टर्म्स में वैल्यूज देख के ही एकदम वो लग रहा है कि नहीं इसी को सॉल्व करना है. सही बात है. तो सिमिलरली 12 विल आल्सो गेट मॉडिफाइड. तो 12 में क्या हो जाएगा, 12 में वी नाउ वांट Rx which is minus x plus 5 to be equal to px square plus q minus 1x plus 6, and this has no distinct real roots. ठीक है, this has no distinct real roots. तो इसका क्वाड्रेटिक अगर फ्रेम करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस 1, एंड दिस वुड बी द क्वाड्रेटिक, एंड इसका नो रियल रूट्स चाहिए. तो नो रियल रूट्स करने के लिए अपने पास आ जाएगा d लेस देन 0. सो d लेस देन 0 वुड बी क्यू स्क्वेयर माइनस 4p इज लेस देन 0. Has no distinct real roots, but p is greater than 0. Then the least value of 3p plus q. p यहाँ पे पॉजिटिव है, so q square would be less than 4p. ठीक है, 3p plus q. 3pq लीस्ट वैल्यू है, 3p plus q. सर सीधा अगर क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 3 डाल दे तो -1 बच रहे. हम्म, हाँ वैसे कर सकते हैं क्या, x को 3 डाल देंगे तो 9p plus 3q.
9p plus 3q plus 1 is greater than 0. So 3 times of 3p plus q is greater than -1. And ये हो जाएगा -1/3. So 3p plus q has to be greater than -1/3. Then upward opening parabola, so has to be positive for all values. So if we consider this as fx, तो ये f of 3 हो जाएगा. f of 3 से आ जाएगा 3p plus q. सही बात है. Range of rx by x square minus 3x plus 2. So 13 में हो जाएगा ये fx is minus x plus 5 by x square minus 3x plus 2. इसका रेंज निकालना है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक. सो इसको y ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो yx स्क्वेयर प्लस 1 minus 3yx plus 2y is equal to 2y minus 5 is equal to 0. अब इसका d greater than equal to 0 कर देंगे. So that will be 1 minus 3y whole square minus 4y into 2y minus 5. We want this to be greater than equal to 0 for all values of y. For all values of x. So this is simplify करके निकाल लेना. 1 minus 6y plus 9y square minus 8y square plus 20y greater than equal to 0. So this will be like y square plus 14y और कांस्टेंट में कितना है +1 greater than equal to 0. तो 14 नहीं होगा क्या? 3 to the 6, 4 to the 8, -4 -5 हो गया +20. सही बात है. ये वर्ब्स को तो y equals to 14 का स्क्वायर 196 प्लस माइनस सॉरी क्या करो तो उसके अंदर आएगा ना. ये तो सीधा यहाँ पे -14 ही होगा सिर्फ. So y would be -14 plus minus root over of 196 minus 4 divided by 2. Whatever it comes out to be. 4√3 आ जाएगा. -7 I think C आंसर आ जाएगा. Okay. Range of this will come out to be C. Linear by quadratic. Okay, moving on. Next passage. (14). So if we have x power 4 plus 2ax cube plus x square plus 2ax plus 1 equal to 0. Now, this is something that I had mentioned in the class when we were doing polynomials, that in a biquadratic, if the coefficients of from both the ends are identical, so how do we solve? x square से Divide by x square. So this becomes x square plus 2ax plus 1 plus 2a plus 2a by x plus 1 by x square. So that we can convert this into something of this form. So x square plus 1 by x square can be written as x plus 1 by x whole square with a -2. And यहाँ पे plus 2a common ले लिया, तो we'll have a x plus 1 by x. And we have a +1 -2, so the final value ends up becoming -1 is equal to 0. Now the equation has at least two distinct positive real roots. Then all the possible values of a are x plus 1 by x को t dot.
हाँ, x प्लस वन बाई एक्स को t ले लो. So well, for the equation to have at least two distinct positive real roots, one value, मतलब this quadratic must have one real root. Okay, x plus वन बाई एक्स इक्वल टू एक कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू आना चाहिए. So what's the condition for a quadratic to have both negative roots? So for both negative roots, अच्छा नहीं, वैसे भी तो नहीं होगा. x plus 1 by x will be positive. If x is positive, will be negative. If x is negative. So if we want two real roots of this, हाँ ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव रियल रूट्स आ ही जाएगा. x plus 1 by x का ग्राफ तो ऐसा होगा. x plus 1 by x का ग्राफ was something like this. So for any positive value in the range, दो रूट्स तो आएगा ही, except for the case of it being 1 and -1. ठीक है, तो बेसिकली इसका एक भी पॉजिटिव रियल रूट होगा तो दो पॉजिटिव रियल रूट निकल जाएगा. तो वी वांट बोथ नेगेटिव रूट्स का कंडीशन लगा लो. या इसमें सी बाई ये तो नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो फिर तो कोई भी वैल्यू चलेगा बेसिकली. तो इधर में क्या कंडीशन गिवन है? ऑल्सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू -2, यूनिट 2 टू इन्फिनिटी. सही बात है. तो दिस इक्वेशन हैज जो टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1. So t plus a whole square is equal to a square plus 1. अच्छा, यहाँ पे t का रेंज हो गया -2 to 2 plus a whole square is a square plus 1. तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस ए और ये होगा 2 प्लस ए. तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर वुड बी a -2 होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी. इसका रेंज हो जाएगा a माइनस होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी. चलो ठीक है, ये तो चाहिए नहीं होगी. वैल्यूज ऑफ a आर. एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा. डी ग्रेटर देन जीरो तो करना है बस इसके लिए. तो फिर ऑल वी हैव टू इंश्योर इज इसका डी इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है तो रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन तो ऑटोमेटिकली हो गया. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट आएगा. बस अपने को ये इंश्योर करना है कि रियल रूट्स हो. तो रियल रूट्स होने के लिए 4a² -4, और रूट्स भी रियल ही होगा क्योंकि फिर 4a² और +4 हो गया. टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स. इस x को 1 डालेंगे तो क्या होगा? ये 4 प्लस 4a -1. तो a इक्वल टू -3/4. हम्म तो ये आ जाएगा -3/4. -∞ to -3/4.
equation have at least two distinct negative real roots. तो negative real roots के लिए x नेगेटिव होगा तो x प्लस 1/x का -1 कब होगा? नहीं, if x is -1, क्योंकि -1 पे इसका इक्वल रूट्स होते हैं ना, -1 पे वी ओनली हैव वन रियल रूट, सो x इज -1 तो ये हो जाएगा 4 -4a -1, तो इन दैट केस a वुड बी 3/4, तो इसके लिए फिर आंसर हो जाएगा 3/4 टू इंफिनिटी. Exactly, two positive roots and two negative roots. Then the number of integral values of a is 0. ये 0 हो जाएगा, not possible. Hmm. Hmm. और थर्ड पैसेज the vertices of the triangle ABC lie on the quadratic. If ABC is a right angle triangle whose hypotenuse is 4√2, then y equal to fx. Such we have to find the quadratic. So AC is 4√2. So while considering the vertex, तो ये हो जाएगा 2√2, 0, ये हो जाएगा -2√2, 0. So it's a quadratic जिसका roots are 2√2 and -2√2. और b यहाँ पे है. b का वैल्यू -2√2, 2√2 हो 0 जाएगा. अगर इसको 0, बीटा अगर ले लेते हैं -बीटा, तो दिस लेंथ वुड बी बीटा. So 2√2 पाइथागोरस लगा दो अब. तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 2√2 is 8 प्लस बीटा स्क्वायर must be equal to इसका स्क्वायर. सो 2√2 माइनस बीटा होल स्क्वायर. अरे सॉरी, नहीं सेम ही चीज तो आ जाएगा पाइथागोरस से. इसके पास 2 से 8 आ जाएगा, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा. छोड़ो छोड़ो. सर AB का लेंथ 4 होना चाहिए बिकॉज AC का लेंथ 4√2 है, राइट एंगल ट्रायंगल है विद आइसोसेलेस मतलब इक्वल साइड्स, तो 4 हो जाएगा तो 2√2 का स्क्वायर अच्छा हो जाएगा दोनों आइसोसेलेस, राइट. साइड। अच्छा मैं आइसोसेलेस पढ़ा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी. हो गया फिर तो ये 4√2 है, आइसोसेलेस है. तो ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 हो जाएगा. ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा. सो अगर ये 2√2 है तो ये भी 2√2 हो गया. तो AC का लेंथ तो ये तो 2√2 हो जाएगा. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx आ जाएगा -2√2. और क्या चाहिए? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ fx इज गिवन एज fx, तो हो जाएगा y
It's an upward opening parabola. So y is equal to x minus 2 root 2 into x plus 2 root 2. ये तो प्लग इन कर देंगे ना, x को 0 करेंगे तो c कितना आ गया, c आ जाएगा माइनस 2 रूट 2. a टाइम्स आएगा ना ये, a टाइम्स दिस. सो ये हो गया a x स्क्वायर माइनस 8a. तो 8a का वैल्यू है माइनस 2 रूट 2. तो a का वैल्यू हो गया 1/2 रूट 2. So y would be x square by 2 root 2 minus 2 root 2 d. और last वाला है the number of integral values of k for which one root of fx is more than k and the other is less than k. Number of values of fx for which one root is more than k. So basically k lies between the roots हो गया. So k lies between the root के लिए a into f of k has to be less than 0. So a का value 1/2 root 2 into f of k. So k square by 2 root 2 minus 2 root 2. This has to be less than 0. So that's to say k square is less than 8. So k has to mod k has to be less than equal to 2 root 2. तो 2 root 2 कितना होगा, वो root 2 is 1.4. 2 root 2 हो गया 2.8 माइनस से 2.8 प्लस में, तो -2 -1 0 1 2 5 वैल्यूज. मुझे फोन करो कर दो. Is everyone okay with this last wala passage? Number of integral values of k for which one root is more than and one root is less than. So k has to lie between the roots. And for k to lie between the roots, the condition is a into f of k has to be less than 0. Okay? So that would be for the sheet today, the small sheet discussed quickly. Right? So again, I'll share another sheet for the next class on a different topic, and I'll see you all then. I hope everyone's clear with the questions that we did today.